Thank you so much, Dr. Tamazar. Thank you. Now, Ms. Risha Zia, can we please have her on the stage? Thank you so much for sharing such good insights with us. I, for one, know that I need to hit the gym and take care of my physical health. Thank you. Please, guys, a round of applause. Girls, rather. Acha ji, so how did you guys find the session on physical wellness? तालियां? Great, excellent. अब ज़रा हम थोड़ा गौर फिक्र करते हैं उस स्कोर के ऊपर जो आप सबका इस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. ओवरऑल स्कोर जो फिजिकल वेलनेस का है वो कितना है? Alright, overall 3.42 है, which is not bad. I think we're in the middle somewhere. अब इसको drill down करते हैं and see where are we lacking and what we need to improve. So I think the first one is being diet. और diet में हम stand कर रहे हैं 4 पे. Really? Seriously? क्या बात है. आई थिंक यहाँ पे सब वेजिटेबल सैलड और ड्राई फ्रूट्स और हर तरह की ज़रूरी चीज़ें खाने वाले लोग बैठे हैं. आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू. मुझे भी सिखा दें थोड़ा सा साथ साथ. सो एनी हाउ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक शी मेंशन. लेट्स गो टू द अदर वन. And the next one is, I think it was exercise, movement, yeah. So movement में हम हैं 3.5. Now ये सच लग रहा है मुझे. हम इतना मूव नहीं करते. We don't really move much. And what do you think really means by movement, by the way? Taking steps. So I believe all of you here are working in an office, right? Or your own business whatsoever. But you'll be sitting all day, right? So how many of you actually take steps in the day? मैं तो नहीं लेती. Please, मैं तो हाथ बढ़ खड़ा भी नहीं करूँगी. So who's raising hands? Excellent. Very. ये सच्चाई दिख रही है मुझे. तो ये नहीं दिख रहा ना यहाँ पे. So that's what I'm trying to say. Let's be honest about it. The third one is, sorry, ये screen हमें धोखा दे जाता है बार बार. Health. Overall health. So this means your overall, your intake of food, your everything comes into this. And this needs to be obviously improved. ये बिल्कुल सही reflect कर रहा है. बचपन से हम ख़वातीन को सिखाया जाता है कि खाना कम खाना, मोटी नहीं होना. Unfortunately, body shaming is really, what do you say, deep rooted in our society, right? और उसी को मारने के लिए अभी डाइट की बात भी कर रही थी ऋषा. हम डाइटिंग पे चले जाते हैं. अब डाइटिंग में भी हमें पता है नहीं, हम कीटो शुरू कर देते हैं. अब कीटो के जो इतने आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसका क्या होगा. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर हेल्थ. और ख़ुद वो कहते हैं ना, नीम हकीम ना बने प्लीज़. ठीक है कि अभी बस पेट का दर्द है तो फ्लेजल खा लो, और बुखार है तो पैराडोल खा लो. दिस इट डजंट वर्क दैट वे. एंड आई नो सजाज इज लुकिंग एट मी बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट द right person to even say this, because I also do this. However, today is a reality check for all of us, so we need to follow that. अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है, और ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, और ये है जी फाइनेंशियल वेलनेस. अब कहा यह जाता है, इसका छोटा सा मिथ है बिफोर आई कॉल अपॉन द सेक्रेड स्पीकर एंड द इंस्पायर्ड स्पीकर ऑन द सब्जेक्ट. जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो हम समझते हैं पैसा आया और जी हम हो गए सिक्योर. राइट? अग्री? एंड एक्चुअली दैट्स नॉट द केस. पैसा आता है, अच्छी बात है, बट दैट्स नॉट फाइनेंशियल वेलनेस. पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ फाइनेंशियल वेलनेस. क्योंकि हम ख़वातीन, और सारी ख़वातीन और हम सबको शौक़ है किस चीज़ का? शॉपिंग करने का. एग्जैक्टली. सो आई एम अ शॉपaholic and I'm going to proudly add, but I have a busted credit card also, right? How many of you actually have a busted credit card?
ये भी सच नज़र नहीं आ रहा मुझे. चलें. So I won't embarrass myself here further. So without further ado, I'm going to call upon Sajjad Parmar, CEO, Talent Accelerator, and he'll be talking about financial wellness, debt management, budgeting, short-term and long-term savings. With a huge round of applause, please welcome Sajjad on the stage. Thank you. Assalamu alaikum ji. So, जैसे शालिनी ने mention करा, I'm going to talk a little bit about financial wellness, but I'm going to change the format. What I'm going to do is, मैं थोड़ा सा background आपसे share कर लेता हूँ. This is an intervention I did in my last company, and we actually worked with one of the best, I would say the most leading provider of financial wellness products globally. There's a company called WTW, जो HR में शायद उन्होंने नाम सुना हुआ हो, formerly known as Willis Towers Watson. They have the best, what we call financial wellness education programs and products जो employees के लिए, corporates के लिए use करते हैं. हमने उनके साथ एक पूरी education series बनाई थी अपनी last company के लिए, right? And this is a research, they do a financial wellness survey every 2 years, global survey होता है. And you can see the numbers here कि why is financial wellness important. यहाँ पे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है why financial wellness is important for us. जो हमारे यहाँ पे social economic challenges हैं, I don't need to go into the details, everyone is aware. But obviously, financial wellness का there is a direct impact also on emotional wellness, right? एक सर्वे यहाँ पे नहीं है, but ये एशिया पैसिफिक का इंक्लूडिंग पाकिस्तान का सर्वे ये कहता है कि 40% people in Asia are living what we call paycheck to paycheck. उनके पास 3 months की what we call savings नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे किसी का जॉब चली जाती है. The benchmark for what we call emergency savings is about 3 months of salary, right? And 40% people in Asia, so आप अंदाज़ा लगा लें, we're talking about 2-2.5-3 billion लोग, उनके पास ये नहीं है, right? So financial wellness is absolutely a big concern, and therefore the numbers you can see, I'm not going to go into the detail, right? I'm not going to actually go through the whole presentation. What I'm going to do is I'm just going to briefly define कि ये 4 चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं होती क्या हैं, and what we'll do is कि हमारे पास इसमें काफ़ी सारे data है, tips हैं, वो हम आपको सबको email कर देंगे, right? So चारों topics के ऊपर specific tips that you can take. We will send them to you so you can use them, you can figure out क्या है. I'm just going to briefly talk through it कि ये हमारे पास होता क्या है. I really like this phrase कि beware of a little expenses. It's like a small leak that can sink a ship, right? हमारे पास इस तरह के बहुत छोटे छोटे expenses होते हैं, हम पता नहीं चलता, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. वो recurring होते हैं, daily भी हो सकते हैं, monthly भी हो सकते हैं, but these small things add up. And so it's a small leak, and if you don't pay attention, it ends up being a lot of amount. एक बहुत बड़ा पूरे financial wellness में issue है impulse spending का, right? Again, I'm not going to go through them, but you know, instant gratification is something that we all look for. Emotional triggers होते हैं, social pressures होते हैं, peer pressures होते हैं, right? जिसमें हम give in कर देते हैं. One of the fundamental aspects of financial wellness is कि ये जो आपको triggers होते हैं, अगर हम इनकी कुछ if we can work around these triggers, then I think we will save ourselves from a lot of spending that we do, right? And these are the triggers that you have to look for. कि आपको कब trigger होता है? मेरी अम्मी कहती हैं कि जब भूखे हो तो grocery shopping के लिए ना जाया करो, you know, because, and I know that it happens with me when I go, I end up buying a lot of things I don't need, and so that's the thing. So if you have these triggers, I think we have to save ourselves from these triggers, and you have to know कि आपका trigger क्या है. Budgeting. So हमने इनके साथ जब research करी तो we found out that there are 17 elements of financial wellness, but अगर हम इनको 4 में divide करते हैं तो there's what we call budgeting, there is debt management, there is short-term savings, and there is long-term savings, right? तो again, I'm not going to go through each of them in detail, but budgeting क्या है? Simple, आपको I don't need to tell you. Basically आपको कितने पैसे आ रहे हैं, आपका कितना what we call fixed income आपकी जा रही है. Let me actually go to the slide on this. So एक तो ये है कि budgeting में आप categorize करें कि आपकी spending किस तरह हो रही है, right? What we call essentials, rent है, fuel है, खाने का खर्चा है, ABCD, right? Then we have what we call luxuries and treat. आप हफ्ते में एक बार बाहर जाते हैं, you go out and you know eat out with the family, या आपने movie देख ली, you know what you define as luxuries. And then we have what we call emergency or capital. गाड़ी खराब हो गई, do you have capital for that? अल्लाह माफ़ करे, you know somebody fell sick, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, you have to go to a specialist, you have money for that, all of that, right? So as part of budgeting, you need to identify these 3 categories for yourself, right? And once you start to do this on a monthly basis, 6 months में आपको एक forecast मिल जाएगा कि आपकी monthly spending fluctuation कैसे हो रही है, right? हो सकता है groceries roughly by and large same हो,
but it's the luxuries part that is quite volatile. Similarly, हर महीने कोई ना कोई emergency हो रही है, you have not really thought about कि वो किस तरह हो रही है, right? And so once you start to make, and थोड़ा काम लगेगा, yes, but again, it's about actioning, right? So if you start making a list of, you know, what you're spending on and how you're spending on and when you're spending on, आपको 3, 4, 5, 6 महीनों में अपनी spending जो trends हैं उसके बारे में पता चल जाएगा. And then of course, you want to consider a savings time frame कि मेरा इतना budget है over and above, and what do I need to do to start saving? Ultimately, the entire concept of financial wellness is not about how much you spend, it's about how much you save. So budgeting, debt management, short-term savings, long-term savings का purpose ये है कि you have a goal in mind and you want to get to that goal. And then you have to work backwards कि उस goal को achieve करने के लिए मुझे क्या काम करना है. Again, I'm not going to go through कि आप क्या कर सकते हैं. We will send you all these slides. But I just want to talk through, again, हमारे पास बहुत specific यहाँ पे tips हैं कि budget बनाएं, 21 days for a habit, 90 days for a lifestyle change. This is एक research है, ये कहती है. If you want to create a new habit, आप 21 दिन तक उसको करें कि सुबह जल्दी उठना है, 21 days, you wake up at 5 a.m., 6 a.m., then that's how it becomes a habit. And a lifestyle change takes about 3 months. आप exercise नहीं कर रहे थे, we just talked about it, and you want to start exercising. To make this a lifetime habit, you have to do this for 3 months straight. Budgeting is the same. You have to do it regularly and you'll get good at that. Debt management की बात करते हैं. There are two types of debt. There's good debt, which ultimately actually is adding value to you. आपने एक asset लिया है, आपके पास एक debt है, उसको आप pay off करेंगे, 4, 5, 10 साल बाद वो asset आपका हो जाएगा. Even though it's debt, but this is what we call good debt. Bad debt वो है कि आपने spend करा है, आपने loan लिया है, आपने कुछ करा है, but it's not really adding anything to your financial savings, right? तो ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी पैसे लगा रहे हैं, is it a good debt or is it a bad debt? Credit cards में बहुत कहानियाँ हैं, you know, आप टाइम पे भरते हैं, नहीं भरते हैं, आपके cards maxed out है, नहीं है. If you add budgeting aspect to that, you find out कि आपके पास कितना debt है, कब चुकाना है, interest क्या बन रहा है, right? Again, these are things हम taken for granted लेते हैं कि भाई credit card बना हुआ है, payment आएगी. But again, if you link it to what you're spending on, again, essentials, luxuries, and emergencies, तो एक आपके पास trend line बन जाएगी कि आपकी जो spending है वो क्या है. एक मैं आऊँगा आगे. Yes, you also want to keep a track in your family and maybe to yourself, because sometimes हमारे पास होते हैं ना spots होते हैं, signs होते हैं कि जो बंदा debt में होता है ना, उनका behavior change होता है. And it's not surprising. If I'm under debt, right, अचानक से, and it's a big debt, it is going to impact my sleep. It is going to impact my emotional stress. It is going to change my habits. It is going to, you might become very quiet, right? ये सारे points जो हैं, they are based on research. This is based on the behaviors that people display when they're under debt. तो अगर आपकी family में, आपके friends में कोई इस तरह के behaviors दिखा रहा है, it's probably worthwhile having a discussion with them कि आप, why are you so, अचानक से अगर behavior change हो रहा है and they're displaying any of these, you want to think about कि क्यों behavior में change आया है. Again, some very specific tips, you know, on how do you manage debt. All right, short-term savings. So I'm going to differentiate between short-term savings and long-term savings. Short-term savings is anywhere between 1 to 5 years from a financial wellness perspective, and long-term savings is anything more than 5 years. And long-term savings का एक बहुत simple तरीका याद रखने का ये है, and to make it simple, you're basically thinking about your retirement in ahead. Just keep it simple. Right? और हमारे यहाँ पे challenge ये है कि in Pakistan we don't have what we call a proper retirement plan. Asia में भी यही मसला है, but हमारे यहाँ पे जो provident fund gratuity है, they're not exactly a robust what we call a long-term savings plan. But short-term savings का एक ये बड़ी famous वो है कि आप spend करके save ना करें, आप पहले define करें कि आप save क्या करेंगे और उसके बाद जो पैसा बचता है, उसमें आपको you have to control yourself. So you're basically changing the narrative. हमारे ये होता है कि भाई 100 रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपए की spending है, 90 rupees की spending है, तो 10 में बचा लूँगा. No, you have to flip the equation and say, if that's your goal, I need to start saving 17 rupees every month. So that goes onto your saving, and now you have 83 rupees to deal with. And then you divide कि 83 का essentials क्या है, luxury क्या है, और emergency क्या है. So it changes the narrative completely on how you start saving, because now you're prioritizing saving than spending. Why have savings? Not a surprise. Peace of mind, expand your options, gives you freedom. मैं इसके बारे में आपसे बता चुका हूँ क्या है. If you're just starting out, I would say कि आप बड़ा गोल ना रखें, especially short-term savings में. Short-term savings में ये भी हो सकता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है,
I want to send my kids to university or school. So it doesn't have to be a big audacious goal. But ये है कि start small. हमारे पास मसला कभी बार ये आता है कि हमने कोई चीज़ करी नहीं होती है and we start making a huge goal without doing the prep work and planning. अगर आप budgeting एक साल से कर रहे हैं and you have really good control of what it is, then making a goal becomes easier, right? तो थोड़ा सा ये काम वाली activity है, but financial wellness, given how important it is for us in the country, तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर. A few tips again on what you can do. There are small things. For example, आप एक item खरीद रहे हैं, I don't know, दराज से, and एक पे कुछ वो, I don't know, 100 रुपए चार्ज कर रहा है, एक में free shipping है. Go for free shipping. I know it adds work, but every action you take against what you spend is going to add up, right? तो आपके पास हमेशा option रहेंगे, right? आप अपनी habits change कर लें. If you're eating out, I don't know, 4 times a week, आप उसको 3 times कर लें. Just one lunch a week might save you 400 rupees. It's 2,000 rupees a month, and small changes basically add up. तो अगर आप consciously, if you're looking at what you're spending, how you're spending, and how you're saving, all of these things are going to add up, and they're going to really make a difference in short amount of time. Investment की एक बहुत बड़ी, and in the afternoon we also have a session, but investment की एक बहुत बड़ी जो मैंने personally अभी खुद सीखी recently is, we say don't put all your eggs in one basket. अगर आपने एक ही सेविंग फंड्स बनाया है और उसमें सेव कर रहे हैं और उसी में आपकी मतलब 5, 10, 15, 20 साल की सेविंग्स हैं, गुड फाइनेंशियल वेलनेस एडवाइस विल टेल यू दैट यू शुड डाइवर्सिफाई. आप कैश में ना रखें, आप कुछ गोल्ड खरीद लें. आई डोंट नो इफ़ यू हैव इनफ मनी, आप किसी एसेट में डाल दें, आप स्टॉक्स में डाल दें, म्यूचुअल फंड्स में डाल दें. अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान नाउ वी आर गेटिंग वेरी फास्ट ऑन इस्लामिक ऑल शरिया compliance. There are lots of options available. Faisal Bank is here, please go talk to them. You have a lot of options now available. तो आप and this helps because खुदा ना ख्वास्ता आपने जिसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, something goes wrong, that's the only backup you have. If you have diversified your investment in 2, 3, 4 different areas, अल्लाह ना करे अगर एक में कुछ डैमेज होता है या ऊपर नीचे होता है, rest of your funding is saved. So whatever you want to invest in, whatever you want to save, best advice, best practice in financial wellness is कि इसको आप diversify करें. Again, some quick tips हम आपको देंगे. A big part of this is research the market. The more you know about the options that are available, the better decision you'll be able to make. Talk to people. We have a lot of amazing financial advisors in the country. हमारे यहाँ पे जो banks के पास products and services हैं, उनसे जाके बात करें, उनसे मिलें कि आपके पास क्या options हैं. They can sit with you. क्या आपकी salary है, कितना आपका budget है, how much you want to save, what option, what product is best for you. थोड़ा काम करना पड़ेगा, but if you really care about your financial wellness, it will help you in the short term and in the long term. लॉन्ग टर्म सेविंग्स, मैंने जैसे बताया कि दिस इज़ टिपिकली मोर देन 5 years. एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये है कि हमने अपनी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा है. सो आई एम गोना समराइज बेसिकली लॉन्ग टर्म सेविंग्स इन अ शॉर्ट वे, राइट? इफ आवर रिटायरमेंट इज एट 60 or 65, राइट, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच मनी यू नीड व्हेन यू आर 65, assuming inshallah everybody lives to 85 years, which is the standard, right? आपके पास 20 साल का रिटायरमेंट